Hi guys, welcome back. We're now going to be moving our discussion further and we're going to be discussing about the differences between real and nominal values because in this video we're going to be discussing an important concept, that is the difference between real GDP and nominal GDP. Now, in the previous videos, we've already seen how do we measure GDP. We talked about what national income is, how national income equals national expenditure and output. We discussed about a circular flow. We discussed what is a macroeconomic equilibrium. How would if rise in injections increase national income and GDP, and how would increase in withdrawals reduce national income and GDP. And we also discussed the three different methods of measuring GDP. We discussed what is the difference between GDP and GNI. And so now we need to understand that it is very important for us to distinguish between real and nominal measures of national income and output. नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, नेशनल आउटपुट को मेजर करने के लिए हमने जीडीपी को मेजर किया था, फिर हमने जीएनआई को मेजर किया था. तो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो जीडीपी की नॉमिनल वैल्यू निकलती है. हम जीडीपी की नॉमिनल वैल्यू पर अराइव करते हैं ना, हमें उसमें से रियल वैल्यूज़ को since we arrive at nominal values of GDP, there's a difference between nominal values and real values, and we'll see that in this video. Because when we add up, जब भी हम GDP निकालते हैं using the output method or the income method or the spending method, तो हम output को add up करते हैं, इसी तरह spending add up करते हैं, incomes add up करते हैं. तो technically we are actually adding the money values of output, spending और incomes. तो हमारे पास जब जीडीपी एट यूजिंग आउटपुट मेथड या जीडीपी यूजिंग स्पेंडिंग मेथड या जीडीपी यूजिंग इनकम मेथड आती है, टेक्निकली हम नेशनल इनकम को मेजर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वी एंड अप विद द नॉमिनल वैल्यूज़. हम नॉमिनल वैल्यूज़ पे अराइव करते हैं. जो मनी वैल्यूज़ होती हैं नॉमिनल वैल्यू, हम नॉमिनल वैल्यूज़ पे अराइव करते हैं. आपका क्वेश्चन होगा कि सर रियल वैल्यूज़ क्या होती हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको सारा. इसी तरीके से तो हम जो नॉमिनल वैल्यूज़ पे अराइव करते हैं, जैसे हम जो जीडीपी निकाल रहे होते हैं, तो ये हमारे पास जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आती है, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आती है. इसी तरह हमने फिर जीडीपी को कन्वर्ट किया था जीएनआई में. तो हमारे लिए यूज़फुल क्या होता है, हमारे लिए यूज़फुल होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस. सिमिलरली हमने जीडीपी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा जो दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जीडीपी और जीएनआई हैं. और कौन से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस ले रहे होते हैं. ठीक है, हम उसको कन्वर्ट करके फैक्टर कॉस्ट पे हमने देखा कि हम उसको किस तरीके से जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जो है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे लाने के लिए किस तरह सब्सिडीज़ और टैक्सेस को नेट ऑफ करेंगे. एंड वील डिडक्ट, अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस है तो वील डिडक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट एंड वील add back subsidies to arrive at GDP at factor cost. But GDP and GNI at market prices are the most commonly used concept of national output and national income. So जब हम GDP को वैल्यू कर रहे होते हैं, तो हम जब GDP को वैल्यू कर रहे होते हैं तो हम GDP को वैल्यू कर रहे होते हैं उसकी करंट प्राइसेस पे. ठीक है, यानी GDP एट मार्केट प्राइसेस जो निकल रही होती हैं वो उसकी करंट प्राइसेस होती हैं. तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब हम जीडीपी को वैल्यू कर रहे होते हैं और हम जीडीपी को वैल्यू कर रहे होते हैं यूजिंग द करंट प्राइसेस, तो वो सिंपली आपकी मार्केट प्राइसेस होती हैं. आई मीन इट्स इम्प्लाइड कि वो जो जीडीपी एट करंट प्राइसेस हैं वो दे आर मार्केट प्राइसेस बिकॉज दोज वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्राइसेस इन द इकोनॉमी, राइट. सो वो जो हमारे पास गाइस जीडीपी आती है ना, उसको हम मनी जीडीपी बोलते हैं. तो हमारे पास जो जीडीपी आती है, जो हम कह रहे हैं दैट इज़ जीडीपी दैट इज़ वैल्यूड, जीडीपी दैट इज़ बेसिकली वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, ठीक है, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस बेसिकली. तो ये हमारी मनी जीडीपी होती है बिकॉज ये करंट प्राइसेस के ऊपर बेस्ड होती है, राइट. और ये एक नॉमिनल मेजर है. इट इज़ अ नॉमिनल मेजर ऑफ जीडीपी. इट इज़ अ नॉमिनल measure of GDP. Now, what you need to understand is that let's say if this is a nominal measure of GDP, मैं आपसे बोलूँ in the year 2000, let's say you had a GDP of, I don't know, maybe $3 billion, let's say, and in 2010 your GDP was, let's say, maybe $5 billion, right? Now, since GDP is basically valued at current prices, that is your money GDP. So if you're saying that 2000 से 2010 में हमारी GDP is going up by, let's say, 2 billion इसमें, so that's a good thing because that is implying, it's actually implying that more output is produced and more income is generated basically. But you need to understand that
not all of 2 billion is actually worth 2 billion of values added in the economy, or not all 2 billion is worth 2 billion worth of output being produced. Because since GDP is measured at current prices, which is your money GDP, it also has the effect of inflation in it, right? So it possibly might be giving us an inflated figure. So if you want to calculate, if we sort of want to calculate how much of this is because of a rise in output, we need to arrive at real values then, right? Because nominal GDP is actually including both the quantity of the goods and services produced and the changes in the prices. So the nominal GDP or the money GDP is factoring in both price levels and changes in the price levels and the quantity of the goods and services produced. So हमारे पास जो 2010 में 5 बिलियन की GDP है, इसके अंदर ये भी फैक्टर्ड इन होगा कि आपकी करंट, क्योंकि हम GDP निकाल रहे होंगे करंट प्राइसेस पे, and current prices could be inflated. Maybe there's a lot of inflation in the country, right? So it's not really reflecting the true value or the true value of output that has been added in the economy, right? So overstated figure हो सकती है, that could be misleading. So real GDP क्या करेगा? It actually reflects only the quantity of the goods and services produced, because it will remove the effect of price changes, right? So for instance, जैसा कि मैंने आपको अभी बताई ये बात, and to be a little more precise and narrow it down, कि अगर हम let's say हम ये कहते हैं कि 2000 से लेके 2010 में let's say कि the increase, we found out that when we measured our nominal GDPs in 2000 and 2010, we found out that there was a 70% increase in money GDP or nominal GDP, right? And now the thing is that a 70% increase in nominal or money GDP is due to more goods and services being produced, but it is also due to increase in the general level of prices in the economy, right? Because prices of everything, of all the industries, might have gone up in these years, of all the goods and services or the output generated by that industries, or in general economy में आपकी general level of prices तो increase हुई होंगी. So जो भी value addition हुई होगी output के अंदर by all the industries, उसकी जब money value हमने निकाली होगी तो it would have the effect of price increase or inflation in it, तो वो inflated होगी. Now हमें अगर तो ये हमारे पास 70% increase is a nominal increase. Now if you want to find out the real increase in GDP, what we want to find out is that we want to determine how much of the 70% nominal increase was due to increase in general level of prices, that how much of the 70% increase in GDP is actually because of increase in the general prices in the economy, level of prices in the economy, and how much was due to the increase in quantity of goods and services being produced, right? कितना increase जो है वो प्राइसेस की वजह से आया है, 70% में कितना इंक्रीज प्राइसेस की वजह से है और कितना इंक्रीज एक्चुअली में मोर आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस की वजह से है. बिकॉज ये देखें, ये जो 70% का इंक्रीज है नॉमिनल जीडीपी में, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एनी change in nominal GDP or money GDP reflects the combined effects basically of changes in quantities and the changes in prices, right? It has the combined effects of changes in quantity, changes in prices, right? So we need to isolate that. We need to isolate how much of that increase is only coming because of increase in actual quantity of more output being produced, right? And that is exactly why economists make the distinction between real and nominal values, right? So guys, you see the GDP that is valued at current prices economy mein, when we measure the GDP, like I said, we measure it at current prices, that is money GDP, right? Which is your nominal measure of GDP. So now since you want to find out the effect, how much of it has the increase in the price effect or the decrease in the price effect, whether how much of the changes in money GDP has the effect of inflation or deflation in it, we want to calculate the real GDP. So GDP that is valued at base year prices, right, is a real measure of the
output, or the real measure of the volume of national output and national income, that is national output and national income, which is the same thing. तो हम उसको रियल टर्म्स में, कि जब हम बात करते हैं, जब हम रियल मेजर में उसको देखते हैं, एक्चुअली वी ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट हाउ मच ऑफ दैट GDP in that, in the next year is actually based on actual volume of output or volume of income, right? Instead of the price effect, uh, you know, distorting the actual real measure, or distorting the actual volume of output, because it has both the effects in it, right? So any changes in nominal GDP is actually, it reflects, or it factors in the combined effects of changes in quantity and changes in prices, right? So when you are measuring real GDP or real income over different periods, when you're measuring real GDP, we sort of measure it using the base year prices. अब ये base year prices क्या होती हैं, किस तरह हम मेजर करते हैं, इसकी पूरी अभी मैथमेटिकल वर्किंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज ये MCQs में इसके ऊपर बड़े कंफ्यूजिंग आते हैं MCQs कैलकुलेशंस के. सो अब ये समझ लें कि जब हम रियल GDP कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम बेसिकली जो प्राइसेस ले रहे होते हैं, हम बेस ईयर की प्राइसेस ले रहे होते हैं. सो जब भी हम चेंजेस निकालते हैं रियल GDP में, सो चेंजेस इन रियल GDP या रियल इनकम्स आर रिफ्लेक्टिंग ओनली changes in real output. So if you're saying that real GDP in year 1 was 100 million and the real GDP in year 2 was maybe 150 million, so 50 million so real output, actual output बढ़ा है हमारा. The volume of output, that is, we're talking about actually more output being produced, and because of that more income being generated, because increase in national output would equal the increase in national incomes, right? So, and you know that we measure national output and national income by measuring GDP, right? Now, to sort of recap, what I'm trying to say is, because for a lot of students, this is sort of a new concept as well, that your money GDP is also, which is known as your nominal GDP, is basically, you define that by saying that it's your total monetary value of all the, it's your total monetary value of all the final goods and services that is produced within a country or within a country's borders during that specific period of 1 year, right? And this money GDP is measured at current market prices, right? And your money GDP includes, or changes to the money GDP includes changes in both quantity of output and the price levels, right? That is inflation or deflation. Inflation means increase in prices in the economy, deflation means decrease in prices in the economy, general level of prices in the economy. So money GDP जो होती है does not adjust for changes in price levels, so it can, you need to understand that मनी GDP प्राइस लेवल्स में चेंजेस को एडजस्ट नहीं करता, रियल GDP प्राइस लेवल के चेंजेस को एडजस्ट करता है. एडजस्ट करना मतलब कि उसको माइनस करना. प्राइस लेवल में तो चेंजेस आ रहे हैं, उसको हटाना वहाँ से. अभी न्यूमेरिकली भी समझाता हूँ उसको. सो अगर मनी GDP हमारे पास ज़्यादा आ रही है, लेट्स से इफ इन 2025 द मनी GDP इज़ वेरी हाई इन पाकिस्तान, सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस. आइदर मोर गुड्स एंड सर्विसेज वर बीइंग प्रोड्यूस्ड विच इज़ हायर आउटपुट, सो हायर आउटपुट की वजह से आ रही है, और यानी दोनों चीज़ हो सकती हैं. It could be because of more inflation, or prices of the goods and services have actually gone up, right? So let's say if a country produces in year 1, let's say इसका example भी कर लेते हैं. Let's say in year 1, let's say the country is producing 1,000 units, 1,000 goods, 1,000 units of goods, and let's say at $10 each. Like, let's say this is your general price at $10 each. So the money GDP would be $10,000, right? हमने अब एक एवरेज सी जनरल प्राइस ले लिया है ऑफ एवरीथिंग, सेइंग कि भाई लेट्स से ये उसकी एवरेज जनरल प्राइसेस हैं, राइट? सो 10,000 यूनिट्स हमारी मनी GDP होगी. बट लेट्स से दैट इन ईयर 2 the price of these goods rises to $12, right? And we are still producing 1,000 units. In year 2 में भी हमने 1,000 units produce किए, so our GDP would be equal to 12,000. So here the increase in money GDP by 2,000, हमारी money GDP is going up by $2,000, right? So the increase in money GDP by $2,000 is, reflecting price inflation, and it's not actually reflecting an actual increase in output, because there's no actual increase in output. It's still the same. The output is still produced 1,000 units in year 2 as the same when we were producing 1,000 in year 1, right?
So that is why economists want to calculate real GDP. So real GDP is going to measure the total value of the goods and services produced within a country that have been adjusted for changes in the price level, right? So if you want to define real GDP, and I want you to write this down as I speak, that real GDP is basically the measure of the total value of all the final goods and services produced within a country that have been adjusted for changes in price levels. अब यही definition GDP की भी मैंने दी थी. मैंने GDP में भी यही कहा था कि your GDP, which is your money GDP, is a total, लेकिन वहाँ पे मैंने बोला था it is a total monetary value of all goods and services produced within a country at the current market prices. और real GDP क्या बन जाएगी? हमारी real GDP बन जाएगी it is a total value of all the final goods and services produced, but adjusted for, you know, changes in the price levels. That is adjusted for inflation or deflation. And do remember the fact that your real GDP is calculated, आपकी जो real GDP होती है, it is calculated using constant prices from a base year. अब ये किस तरह होता है मैं आपको बता देता हूँ, but I'm going to write this down as well in the digital notes as well, and you can write this down as well as I'm speaking, that आपकी जो real GDP होती है, it is calculated, right? आपकी जो real GDP होती है, I'll write this down in fact, that your real GDP, right, is calculate कैसे होती है? Calculated using, I'm using the word constant prices, and I'll explain what this means because in numerical examples और clear होगा. Using constant prices from a base year, and I'll tell you what a base year is, right? From a base year to reflect, right? To demonstrate, to reflect, क्या होना चाहिए? What should I write? To reflect, ये होना चाहिए, to reflect the actual quantity of goods and services that have been produced, right? So the real GDP, guys, real GDP sort of only includes, the changes in the quantity of the output, and it does not includes any price changes. Not कोई price changes इसमें शामिल नहीं होते, सिर्फ changes in the quantity of output होते हैं. And real GDP hence provides a more accurate measure of economic growth because, it removes the distortions that have been caused by inflation or deflation, right? So अगर हम वही वाली पुरानी एग्जांपल देखें जो ऊपर हम ईयर 1 ईयर 2 में कर रहे थे, so let's say if the price of if the price basically rises to 12 in year 2, let's say year 2 में price जो है वो if the price rises to, let's say, 12 in year 2, right? And ये होता है, let's say if this is a situation, the price is rising to $12, but production still stays at 1,000 units, right? So the real GDP, so हम जब real GDP calculate करेंगे तो देखिए money GDP is 12,000 because money GDP कैसे निकलेगी? 1,000 units multiplied by current prices in year 2. लेकिन अगर हम रियल जीडीपी निकालेंगे, मैंने आपसे कहा कि रियल जीडीपी निकलती है यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस एट द बेस ईयर. नाउ वी आर अज्यूमिंग आवर बेस ईयर इज ईयर 1, एंड आई विल टेल यू व्हाट अ बेस ईयर इज. बट अगर हम जस्ट टू सॉर्ट ऑफ कंप्लीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी इन ईयर 2, then what you'll say is कि 1,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं एंड द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर इज $10, राइट? So you'll take $10, so you'll say कि भाई real GDP जो है वो अभी भी क्या है, वो $10,000 ही है, which means there's no increase in real output, right? So this is indicating no real economic growth despite the rise in money GDP. Although your money GDP is 12,000, but your real GDP is still 10,000. That is indicating there's no real economic growth despite the rise in money GDP, right? So देखें money GDP, that is nominal GDP versus real GDP का key difference यही है कि money GDP uses current market prices while real GDP uses constant market prices from a base year, right? And money GDP includes the effect of price changes, inflation or deflation, while real GDP adjusts for inflation or deflation, right? And money GDP includes your changes in both the price levels and output, while real GDP only includes changes in the quantity of the output only. And right, while money GDP जो होता है, it is sort of distorted by inflation or deflation, so it could inflate or deflate the figures and overstate or understate the figures, so it could be sort of misleading. While real GDP is telling a more accurate measure of real economic growth because it's telling that more output has been produced or less output, how much of more and less output has been produced, right? So right guys,
सो ये है. अब हम थोड़ी इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड देन हम इसको फार्मूले से भी देखेंगे. ओके नाउ गाइस, लेट्स लुक एट अ न्यूमेरिकल एग्जांपल दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स. एंड बेसिकली दिस इज दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल, सो बेसिकली दिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल, and it's a simple example to explain the difference between nominal and real GDP. And by the way, here we are assuming that this is an economy that is just producing one particular good. So let's say this is pizzas, right? So the economy is only producing pizzas, so the output of pizzas is the economy's GDP. Now if you have 5 years and the quantity is given, the the current prices are given. So the nominal GDP would be the quantity in the current year multiplied by the price in the current year, right? So let's say that in year 1 your quantity is 5 units multiplied by 10, which so your nominal GDP would be $50, right? Similarly, in year 2, which is your next year, your quantity is 7 times 20, that is $140 is your nominal GDP or money GDP in year 2, right? Which is because nominal GDP measures GDP based on current prices. That's your money GDP, right? Now अगर हम real GDP निकालते हैं, so if you want to calculate the real GDP, you actually take the quantity in that current year that is being produced, but you multiply by the price of the base year, right? तो मिसाल के तौर पे अब here in this example the base year is year 1. We are assuming that our base year is year 1. Base year को बिल्कुल आसान अल्फाजों में if I want to explain it to a kid, so I'll say कि base year is your starting year. I mean starting year का मतलब ये नहीं है कि पहला वाला year, but I mean it's our comparison year. You can say it's the year basically जहाँ पे you know, but as in is the year that we are going to take for comparative purposes कि भाई हम current prices को base year की prices से compare करेंगे. तो comparison purposes के लिए हम एक year assume करते हैं that is इसको base year कहते हैं. एक benchmark के तौर पे एक year जो होता है specific year हम choose करते हैं वो आपका base year होता है. अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नेशनल अकाउंट्स देखें तो उसके अंदर भी आपके पास जब रियल जीडीपीज़ निकाली जाती हैं तो बेस ईयर स्पेसिफाइड होता है. एनीवेज, सो बेसिकली इन आवर एग्जांपल वी आर अज्यूमिंग ईयर 1 एज द बेस ईयर, ठीक है. सो फॉर्मूला इज यू टेक द क्वांटिटी इन द करंट ईयर बट यू मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, राइट. So the real GDP for year 1 would be the quantity in the current year times the price of the base year, तो वो तो सेम ही होगा, which is $50, right? 10 times 5. But in year 2, the quantity of the current year in year 2 is 7, and you multiply 7 by the price of the base year. Instead of multiplying it by 20, you multiply by the price of the base year, that is 10. So real GDP हमारे पास 70 आ रही है. तो आप देख सकते हैं कि year 2 में nominal GDP is 140, but the real GDP is 70. Similarly, in year 3, you take the quantity in the current year, but you multiply it by the price of the base year. So 8 times 10. In year 4 as well, you'll take 10 times 10 and then 11 times 10 in year 5. But year 5 में अगर आप nominal GDP निकालेंगे so it would be 11 units times 28. Year 4 में 10 units times 30. Because you're taking the prices in the current year for nominal GDP or money GDP, right? तो अब बस हम देख सकते हैं कि हमारी जो real GDP है that is less than the nominal GDP in every year, because it is excluding the effect of inflation or the prices and the price increase for that year, right? Now अगर हम base year की बात करें ना, देखें base year एक specific year होता है that is chosen as a benchmark for comparison when we are measuring our let's say real GDP, right? And so in the context of real GDP, right, the prices of the goods and services in the base year, that is $10, which was year 1. So the prices of goods and services in the base year, that is $10, would be used as a reference or constant prices. हम base year की price को एक constant price assume करेंगे कि ये change नहीं हो रही है. And we're going to be doing that to adjust for inflation or deflation in the subsequent years, right? So the base year that is year 1 would provide us the price levels, जो कि $10 हैं. It would provide us the price levels that are considered fixed or constant for measuring real GDP, right? कि base year जो होगा, it's going to provide us with the price levels that would be considered fixed or constant for measuring real GDP. तभी हमने यहाँ पे लिखा था कि GDP that is valued at base year prices is a real measure of the volume of national output, because real GDP is a GDP that is measured at base year prices, right? And so the base year provides the price levels that are considered fixed or constant for measuring GDP. And so all the GDP calculations in the years when you're calculating real GDP are adjusted
to reflect the quantities that are produced. And so for the real GDP, when you're calculating real GDP, they are valued at the base year prices, right? सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि एक तरह से आपका बेस ईयर आपका नॉर्मल ईयर या न्यूट्रल ईयर है, समझ लें कि आप एक नॉर्मल स्टेबल सा ईयर है, ठीक है, हमने इसको चूज़ किया है जहाँ एक ऐसा ईयर होता है, मतलब बात ये वही है ना कि हम ईयर वन को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज बेस ईयर आपका एक नॉर्मल ईयर होता है जिसमें ना कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन होती है, ना बहुत ज़्यादा हाई डिफ्लेशन होती है, ना बूम्स होते हैं, ना रिसेशंस होते हैं, कोई इकोनॉमिक शॉक्स नहीं होते ऐसे, तो एक स्टेबल सा ईयर होता है आपका। बिकॉज किसी ऐसे ईयर को हम चूज़ करें जहाँ बहुत हाई इन्फ्लेशन हो या बहुत डिफ्लेशन हो या रिसेशनरी इफेक्ट्स हो या हाइपर इन्फ्लेशन हो, तो ऐसे ईयर को आप बेस ईयर कंपैरिजन का ईयर कम नहीं ले सकते। तो हम एक नॉर्मल स्टेबल ईयर को बेस ईयर लेते हैं और उस ईयर की प्राइसेस को हम फिक्स कर देते हैं। सो जितने भी सब्सिक्वेंट ईयर्स में आउटपुट होता है उसको हम बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो एक ऐसा ईयर होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ नॉर्मल स्टेबल इकोनॉमिक पीरियड, नाइदर यू आर एक्सपीरियंसिंग हाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, नॉर यू आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ एन इकोनॉमिक शॉक्स, राइट। सो राइट गाइज, तो ये चीज़ हो गई। सो और हम बेस ईयर इसलिए लेते हैं ताकि हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकें, बिकॉज यू वांट टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर टाइम सो दैट यू नो द इकोनॉमिस्ट कैन फोकस सोली ऑन द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, राइट। एंड सो आई मीन अगर हम जैसे if you come back over here, what I've written is that you see, मैंने आपसे यही कहा था कि जो रियल जीडीपी होती है इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस फ्रॉम अ बेस ईयर, और कांस्टेंट प्राइसेस फ्रॉम अ बेस ईयर हमारी न्यूमेरिकल एग्जांपल में $10 हैं, राइट। दीज आर द कांस्टेंट प्राइसेस फ्रॉम अ बेस ईयर, राइट। एंड बिकॉज हम यही कर रहे हैं ना, रियल जीडीपी कैसे निकालने, वी आर मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी इन द करंट ईयर टाइम्स द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, राइट। सो and you see, I mean, so the constant prices that we're talking about are referring to those prices that were prevailing in a specific base year, that is year one. हमारी example में वो year one है, and we are using those prices, those constant prices as a benchmark to measure the value of the goods and services in the subsequent years. तो अगर हमें year two की GDP measure करनी है तो हम $10 से मल्टीप्लाई करें, ईयर थ्री की रियल जीडीपी कैलकुलेट करें तो हम उसको $10 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो टेक्निकली हम जब कांस्टेंट प्राइसेस ले रहे हैं दैट इज $10 ही ले रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी। सो बाय यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस वी आर फ्रीजिंग द प्राइस लेवल्स टू दोज ऑफ द बेस ईयर। दिस इज हाउ इकोनॉमिस्ट सॉर्ट ऑफ यूज एंड एक्सप्लेन इट द वे कि वो कांस्टेंट प्राइसेस को इकोनॉमिस्ट ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि दे से दैट व्हेन वी आर यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस वी आर एक्चुअली फ्रीजिंग द प्राइस लेवल्स टू दोज ऑफ द बेस ईयर, and by doing that we're actually removing the effects of inflation or deflation over time. And so what constant prices would help us do is that constant prices would allow us to calculate the value of economic output as if, you know, prices had not changed since the base year, right? So if prices have not changed since the base year, then in year two, the GDP is $70 actually. And this is reflecting the actual real value of output. So it's actually, okay, in year one, our output was worth $50. In year two, we produce output worth of $70 and then 80 and then 100. So we're actually freezing we're freezing the price levels to those of the base year, which means that we are removing the effects of inflation and deflation over time, which means that it's helping us to those constant prices that we're taking of the base year or that were prevailing in the base year is actually helping us to calculate the value of the economic output in year 2, 3, 4, 5 as if prices had not changed in the base year, right? So, and we do that because we're measuring real GDP, so our goal is to sort of evaluate the changes in the actual quantity of the goods and services produced and not changes in the price levels, right? So by taking constant prices we are ensuring that inflation or deflation is removed. So changes in the GDP from year 1 to year 2, year 2 to year 3, year 3 to year 4 and year 4 to year 5, and over these periods changes in the GDP reflect only changes in production and not price fluctuations, right? So and such a growth, अगर मैं आपसे बोलूँ year 3 से year 4 में GDP is going up from 70 to 80, so ये growth है, right? But this growth trend is showing real increases in output rather than being, skewed or distorted, right? Rather than being skewed or distorted by price level changes. तो यही चीज़ मैंने जो है वो यहाँ पे भी लिखी हुई थी कि the use of constant prices ensures that any changes in GDP are due to real changes in production output
and it is actually not due to fluctuations in price levels. And if you're using a fixed base year's price level, we can measure the actual quantity of the goods and services produced over time without these distortions or skewness that is caused by, you know, changing prices. And actually that's why we fix the price level at the base year. So if you want to calculate the real GDP, you'll actually take the output of the current year multiplied by the price of the base year. और आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है कि ईयर टू में नॉमिनल मनी GDP इज़ $140 वाइल इट इज़ 70, एंड ये 200 है, ये 80 है. ईयर 4 में नॉमिनल GDP इज़ 300 while the real GDP is only $100, right? Okay, guys. Now, guys, I'm going to be keeping the video till here, and there are a few more things that need to be explained as far as this topic is concerned, because, you know, it could be tested in different ways in MCQs. For example, you guys need to know what the price index is. That is, if you want to calculate the consumer price index in a particular year, then how do you calculate that, and what is the concept of GDP deflator. अभी दोनों चीज़ें, consumer price index का concept और GDP deflator का concept हम तभी कर सकेंगे जब हम inflation पढ़ेंगे, and we'll learn more about what an index number is and how do we calculate the consumer price index, and you know what the CPI is in a base year versus CPI in a current year. Only then I will be able to properly explain about, you know, some concepts that are quite interrelated. तो उसके अंदर एक छोटा सा portion रह गया about, you know, price index and about GDP deflator, but उसकी सही आपको समझ तभी आएगी जब हम वो वाला चैप्टर कवर करेंगे, वो हम करेंगे इन्फ्लेशन में. तो वहाँ पे फिर मैं इसको रिविजिट करा के आपको दोबारा समझाऊंगा. अभी अगर मैंने आपको वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की तो सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे, एंड दैट्स नथिंग एल्स. तो बेहतर है कि हम इसको वहाँ पे कवर करें प्रॉपर्ली, एंड लीव दैट जॉब टू मी. दैट्स माई थिंग. आई विल टेक केयर ऑफ इट. यू गाइज डोंट वरी. Anyways, guys, that's it for this video. Now we're going to be starting with the aggregate demand, aggregate supply model, that is the ADAS model. So thank you so much for watching. I'll see you all in that video. Until then, take care.